गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव स्ट्रीमिंग वालों, आप लोगों को आवाज आ रही है कि एक बार बताएंगे? अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो लाइव स्ट्रीमिंग वालों जल्दी जल्दी लाइव आएंगे, फटाफट से लाइव आने का काम करेंगे। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके सो यस अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उसके पहले क्या आप लोगों ने कल जो मैंने आप लोगों को एक क्या बोलते हैं क्वेश्चन दिया था करने के लिए, क्या आप लोगों ने वो क्वेश्चन को कंप्लीट किया? क्या एक बार फटाफट से बताएंगे? जल्दी जल्दी बताने का काम करेंगे। आप लोगों ने वो क्वेश्चन को कंप्लीट किया है क्या? डिड वी कंप्लीट द क्वेश्चन? डिड वी कंप्लीट द क्वेश्चन? और आप लोगों को आवाज भी आ रही है क्या? क्लियर है क्या वॉइस? क्वेश्चन को लिखा क्या? झूठ झूठ नहीं बोलने का, सच सच बोलने का। क्वेश्चन को लिखा, डन है। तो ऐसे ही अगर आप लोग देखेंगे तो वी हैव कंप्लीटेड, अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूंगी तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा हुआ है। कितने क्वेश्चंस को कंप्लीट करा हुआ है? 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का काम किया हुआ है, राइट। प्लस ऑल्सो मैंने आप लोगों के लिए जो चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ है वो भी आपके कोर्स में अपलोड करने का काम किया हुआ है। तो जिन्होंने भी अभी तक कोर्स को, जो फ्री कोर्स है हमारा 1 रुपीज का, वो अगर अपने लोगों ने परचेस नहीं किया रहेगा तो वो परचेस कर लेना। उसी के साथ साथ आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को गूगल फॉर्म भी भरना है। तो जिन्होंने भी गूगल फॉर्म अभी तक नहीं भरा हुआ है, प्लीज गूगल फॉर्म को भी भरेंगे, राइट। और साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे, सो दैट व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को ऐसे ही और अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सो यस, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद दी सेशन टुडे। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर चैप्टर नंबर 2, जहां पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 4 क्वेश्चंस प्लस अगेन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या देने वाली हूँ? होमवर्क देने वाली हूँ। पहले आज हम लोग 4 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, बिकॉज चैप्टर नंबर 2 में अगर आप लोग देखेंगे थोड़े से आंसर्स जो है वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, आपको अगर ध्यान में रहेगा तो, है ना। बट देन ये ऐसा चैप्टर है जो बच्चे पढ़ने का काम नहीं करते हैं, तो आई वुड जस्ट से एवरीवन कि आप लोगों को आपके चैप्टर को क्या करना है? पढ़ने का काम करना है। प्लस ऑल्सो आगे जाने के पहले एक बार मैं सिर्फ अपने सारे बच्चों को बोलना चाहूंगी कि बेटे आप लोगों को ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है जो आप लोगों के लिए चल रहा है, एसएम होने दो या ये होने दो, एसएम होने दो या डीए होने दो, राइट। आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, आप लोगों को लेक्चर्स जो है वो लाइव अटेंड करने हैं। मैम क्यों लाइव अटेंड करने? बिकॉज अगर आप लाइव अटेंड करेंगे ना तो ही तो आपको समझेगा, बिकॉज दिस इज अ राइटिंग प्रैक्टिस। तो ही आपको समझेगा कि आपको मेरे साथ में भी कितना टाइम लग रहा है लिखने के लिए। तो ही आपको समझेगा कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बाद में देखना है तो भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है ही आपके पास देखने के लिए, लेकिन बाद में देखने के बाद कोई सेंस बनने नहीं वाला है। प्लस ऑल्सो दिस लेक्चर्स आर फॉर दोज पीपल जिन्होंने कुछ पढ़ा हुआ रहेगा पहले, और ये सेशन बेसिकली उसके लिए है जहां पे आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कितना लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है। तो ये सेशन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को समझना जरूरी है कि अपने को कितना लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है, ये उन लोगों के लिए है। तो अगर आप लोगों ने पहले अच्छे से पढ़ा रहेगा तो इट विल बी ग्रेट। श्लोक मैं आपको बस एक चीज बोलूंगी बेटा, आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, आपको बस ये रिविजन फॉर्म में दिया जा रहा है, तो अटेंड करने का काम करो। फायदा तो जरूर होगा आप लोगों को, बस यही करके चलेगा कि वो नहीं चलेगा, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो, होपफुली यू आर रेडी एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टुडे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, पहले तो चैप्टर का नाम अगर आप लोग देखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को ध्यान में देना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इसके ऊपर से ज्यादा करके आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमसीक्यू आने का काम चल सकता है आप लोगों को, बराबर है कि नहीं है। तो यस, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा हुआ है वो डेटा क्लासिफिकेशन
एंड इट्स प्रोसेस। अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में आप लोगों को ये चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, अल्टरनेटिव चैप्टर्स, अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स के बेसिस पे आप लोगों को ये चैप्टर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज डेटा क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, वो करने वाले हैं हम लोग। तो आर वी रेडी टू गो? शुड वी स्टार्ट विद द सेशन? एक बार फटाफट से बताएंगे लाइव स्ट्रीमिंग वालों, स्टार्ट करेंगे क्या सेशन के साथ? जल्दी जल्दी बताने का काम करेंगे। चलो एवरीवन, ready with your pen and your book? ready, let's go, let's start. सबसे first question again, data classification and its process. let's go सबसे पहले data classification क्या होता है वो लिखना है। तो data classification is the process of classifying data according to important categories so that it may be utilized and safeguarded more effectively. तुम लोग अपने आप से खुश होते रहेंगे ना कि तुम लोग इतने क्वेश्चंस लिख रहे हो करके, और टाइम स्पैन भी देखो अपन लोग कितना फटाफट से क्वेश्चंस को लिख पा रहे हैं। डन। रिगार्डिंग risk management, compliance and data security the classification of data is of special relevance, लिख के पता लग गया कि पढ़ाई हुई है थ्योरी। अरे क्या बात है, फिर तो बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा, वेरी गुड। जैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा तुम लोगों का, इसीलिए ऑब्वियसली वी आर देयर फॉर यू ऑल, जहाँ पे हम लोगों ने ये सेशन को स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, द कैटेगराइजेशन प्रोसेस may sound very technical, yet it is, इतना ही लिखो, may sound very technical, it may sound very technical। सबसे फर्स्ट है प्राइमरी मेथड्स। The very first is primary methods. Three primary methods of data classification are recognized as industry standards, First one, classification based on content,
examine and interpret files, for sensitive data. Second, context-based classification, considers, among other characteristics, application, location, and creator as indirect members, markers, makers actually. Of sensitive information. Good morning. And third is your user-based classification, relies on human selection, of each document by the end user, relies on each document by the end user. डन. तो द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डन एज पर द प्राइमरी मेथड, जहाँ पे तीन चीजें रहती है. एक रहेगा मार्क करेंगे साथ ही साथ में, एक रहेगा बेस्ड ऑन कंटेंट, दूसरा रहेगा इट विल बी कंटेक्स्ट बेस्ड, और तीसरा रहेगा इट विल बी यूजर बेस्ड क्लासिफिकेशन. तीन अलग अलग तुम्हारे कंटेक्स्ट रहने वाले हैं. प्लीज इसको मार्क करके लेने का काम करेंगे तुम लोग साथ ही साथ में. पहला वाला कौन सा रहेगा? कंटेंट. दूसरा वाला कौन सा है तुम्हारा? कंटेक्स्ट है. तीसरा वाला कौन सा है तुम्हारा? यूजर बेस्ड है. लेट्स गो आगे. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन रिस्क. क्योंकि उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है ना, तो उन्होंने क्या बात करी हुई है? क्लासिफिकेशन रिस्क की बात करी हुई है. ठीक है, तो पहला वाला क्लासिफिकेशन का क्या बोल रहे हैं ये लोग? और मैं जो तुम लोगों को लिखवा रही हूँ वो एक्सपेक्टेड आंसर्स है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वही मैं तुम लोगों को लिखवाने का काम कर रही हूँ. तो मेक श्योर करेंगे आप लिखेंगे सही तरीके से. Hello dear CMA. In addition to the classification kinds, it is prudent for an organization to identify the relative risk associated with data types. How the data is handled and where it is stored.
It is standard practice to divide data and systems into three risk categories. Into three risk categories. First is your low risk. First is your low risk. If data is accessible to the public and recovery is सिंपल एंड मैं मार्क करवाऊंगी तुम लोगों को बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम लोग ये लिखने का काम करेंगे, बाद में तुम्हारा मार्क करवाऊंगी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वापस से. देन दिस डेटा कलेक्शन and the mechanisms around it pose a smaller risk than others. Pose a smaller risk than others. Next, second है तुम्हारा moderate risk. कौन सा वाला है? Moderate risk. They are non-public or internal or internal data. However, it is unlikely to be too mission critical or sensitive to be considered high risk. ये था तुम्हारा सेकेंड पॉइंट. देखो अभी तक अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही लिखने का काम कर रहे हैं. हाई रिस्क मॉडरेट है ना, इट कैन बी लो रिस्क ऑल्सो, इट कैन बी मॉडरेट रिस्क ऑल्सो, तो वो डिपेंड करेगा. इट कैन बी लो रिस्क ऑल्सो और इट कैन बी हाई रिस्क ऑल्सो. इट विल डिपेंड. ठीक है. नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है हाई रिस्क. एनीथिंग even vaguely sensitive or critical to operational security falls under the category of high risk. Data that is incredibly difficult to retrieve
डेटा दैट कैन बी इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू रिट्राइव। और यहाँ पे अपना क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो जाता है। योर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्सो एक चीज सिर्फ इसके रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, आप लोगों को लिखने हैं इसके स्टेप्स। आपको लिखने हैं इसके स्टेप्स। मैं सिर्फ हेड पॉइंट लिख रही हूं, लेकिन इसको इलैबोरेट करने का काम आपका रहेगा। अगर आप देखेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग करंट सेटअप, सेकेंड है क्रिएशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन पॉलिसी, और थर्ड है तुम्हारा प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज डेटा। प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज डेटा, ये तुम्हारा रहने वाला है होमवर्क। ये तुम लोगों को होमवर्क के तौर पे करने का काम करना है। दिस यू हैव टू डू, होमवर्क रहेगा, ये लिखेंगे तुम लोग। और यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है खत्म। क्या सबका हो गया लिख के? अभी डन, आप लोगों ने लिख लिया क्या? लाइव स्ट्रीमिंग वालों फटाफट से बताएंगे आप लोगों ने लिखा क्या, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन वापस से आप लोगों के लिए आ रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो एक्चुअली बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं क्वेश्चन को लर्न करने के लिए, आई डोंट नो व्हाई, बट वो पढ़ने का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो आगे का क्वेश्चन है तुम्हारा वो पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, बट दे डोंट रीड इट। तो वो मैं नहीं चाहूंगी कि आप छोड़े करके, क्योंकि इंस्टीट्यूट, अगर तुमने पास्ट पेपर्स को भी देखा है अपन लोगों ने, तो लाइफ में तो डेली बेसिस पे तो जो पेड बच्चे हैं उनको तो पता ही है, अपन लोगों ने देखा ही है। लेकिन इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन एकदम धप्पा करके तुम लोगों को बताने का काम कर सकती है, देने का काम कर सकती है। तो वो छोटी सी गलती अपने को नहीं करनी है, वो अपने को याद रखना है। वी आर नॉट सपोज टू डू दैट मिस्टेक पर्टिकुलरली, सो यू हैव टू मेक श्योर एंड यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट हाँ, जो भी क्वेश्चंस है उसको पढ़ के लेना है, उसको छोड़ना नहीं है तो इतने से क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला क्वेश्चन है। इसको तुम लोग LDR मार्क करके रखने का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके लेने का काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसका मीनिंग लिखेंगे, जबकि पूछा भी है। और अगर बाई चांस नहीं पूछा और आपको बस क्या बोला है, डिस्क्राइब द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स और व्हाट आर द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स, अगर तुम लोगों को इतना भी बोला गया है फिर भी तुम लोगों को उसका मतलब लिखना है। सो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स स्टार्ट, इज अ फंक्शन that identifies and quantifies all potential values for a variable, as well as their relative frequency. Any population with dispersed data is categorized as a distribution. ठीक है, डन। लेट्स सी इट्स टाइप, क्या टाइप्स है, कोई बता पाएगा क्या, कितने टाइप्स है, कौन से टाइप्स है? एनीवन ओवर हियर, कौन से कितने टाइप्स है, कोई बता पाएगा? वेरी गुड यार, 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स है वो, लेकिन 2 टाइप तो है, लेकिन कौन से वाले हैं? आर बेसिकली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ डेटा,
One is your discrete distribution. One is your discrete distribution. क्या बात है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, आ रहा है तुमको. दूसरा है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. और एग्जाम में ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने बाकी सारी चीजें चार्ट में लिखने के लिए मना की हुई है, लेकिन तुम लोग ऐसे लिख सकते हो. पहले उसको बता दो कि भाई हमको पता है दैट देयर आर टू टाइप्स, ऐसे दो टाइप्स ड्रॉ करके ले लो, लिख के लेने का काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. फिर शुरुआत करो तुम्हारे फर्स्ट से, दैट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, नोन एज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. मेरा यहाँ पे छूट गया था ना तुमको मार्क करवाने के लिए. एक बार जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन में जाओ जरा. फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट था वो मार्क करवा के देती हूँ एक बार का. ज्यादा नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा है. डन. मार्क किए कि तुम लोग साथ ही साथ में. चलो लेट्स गो. द वेरी फर्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. A discrete distribution that results from countable data, that results from countable data and has a finite number of potential value it may be displayed in tables, and the values of the random variable can be counted. Example, rolling a dice, etc. Rolling a dice, etc. Following are the discrete distributions of various types. Following are the discrete distribution of various types. First is binomial. Distributions. It quantifies the chances of obtaining a specific number of success or failure
each experiment it applies to attributes that are categorized into two mutually exclusive and exhaustive classes. Such as number of success and failures, such as number of success and failure. Number of success and failures. Next, second point, Poisson distribution. Poisson distribution. It is the discrete data, the discrete possibility, probability basically, distribution that quantifies the, कोई भी शॉर्टकट मत मारो लेकिन याद रखो, quantifies the chance of a certain numbers of events occurring in a given time period where events occur in a well-defined order. Example, number of flaws or mistakes, accidents, etc., etc. Done. लिख के हो गया आप लोगों का यहाँ तक? ठीक है, लेट्स गो आगे. थर्ड विल बी योर हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. Hypergeometric distribution. Assess the chance of certain number of successes in trials without replacement. Without replacement. From a sufficiently large population done. The very last of discrete distribution is fourth point, geometric distribution. ये hypergeometric था, ये कौन सा है? Geometric distribution.
assesses the probability of the occurrence of the first success. A possible extension is the negative binomial distribution. एग्जाम्पल एज टोल्ड टू यू पीपल, जहां जहां एग्जाम्पल्स लिख सकते हो वहां वहां पे एग्जाम्पल्स लिखने का काम करो, छोड़ो मत, ठीक है? एग्जाम्पल्स लिखने का काम करेंगे. अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव from an advertising firm chooses a hockey players from several institutions at random till he discovers an Olympic participant. तो ये था तुम्हारा पूरा टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. आगे तुम्हारा इसी के अंदर आने वाला है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को लिखना है, साथ ही साथ में लिखेंगे अपन लोग. भले ही 2 या 3 क्वेश्चन आज लिख के हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस दीज आर दी क्वेश्चंस जो बच्चे छोड़ के जाने का काम करते हैं. जस्ट बिकॉज अगर आप देखेंगे तो थोड़े से लेंदी आंसर्स है. नाउ इट कैन सो हैपन कि एग्जाम में तुम लोगों को क्या आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आ सकता है. तो तुम्हारे साथ मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को नहीं करना है. as already informed you people that I know we know that आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो ऐसा आंसर है जो बहुत बड़ा है या जो टेक्निकल है लैंग्वेज में, उसको तुम लोग भूलने का मतलब लर्न करने का काम नहीं करते हो. तो लेट्स नॉट डू दैट एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग विद द कंटिन्यूस डेटा. इसीलिए मैंने तुमको पहले से बोल के रखा है, एक आध क्वेश्चन कम लिख के हुआ तुम्हारा आज के दिन में, या अपना जो टारगेट है वो कम हुआ तो भी चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सेकेंड आया तुम्हारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. Continuous distribution. एक सेकेंड ना.
कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं यार पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तक तो कर ही रही थी मैं, अचानक से पता नहीं क्या हो गया. A distribution with an unlimited, I got it, तो क्या बोल रहा है, unlimited number of data points that may be represented on a continuous measuring scale, on a continuous measuring scale. It is a random variable with an unlimited and uncountable set of potential values. Following are the types of continuous distribution. The very first is normal distribution. Normal distribution. Gaussian distribution. Is another name for normal distribution. It is a bell-shaped अच्छा, अब ये जो आंसर है अगर आप लोगों को चाहिए तो आप पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, या अगर आपको चाहिए तो दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट, दिस विल बी योर सेकंड पॉइंट, आप वैसे भी लिखने का काम कर सकते हो, आपके ऊपर है. अगर आपको चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो 1 2 3 इसमें भी करने का काम कर सकते हो. ये GAUSSIAN, ठीक है. It is a bell-shaped curve with a greater frequency around core point. In other words, ये मत लिखो, सो सॉरी, पहले उसके पहले एक लाइन है. As values go away from center value, as value goes away from the center value,
on each side, the frequency drops automatically. The frequency drops automatically. Second, log normal distribution. तुम ये सबके डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम्स देखेंगे तो तुम लोगों को सारे डायग्राम्स ऐसे बेल शेप्ड ही दिखेंगे. नॉट कंप्लीटली, कहीं कहीं प्रॉपर बेल शेप दिखेगा, कहीं कहीं थोड़ा सा बेल शेप दिखेगा, लेकिन ये बेल शेप जैसा पूरा रहता है. लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, a continuous random variable x follow a log normal distribution. If the distribution of its natural logarithm, समझा? टेक्निकल है इसलिए तुम लोग नहीं पढ़ते हो, इसलिए लिखना जरूरी है. is normal. As the sample size rises, the distribution of the sum of random variables approaches a normal distribution. Approaches a normal distribution. Third, F distribution. F distribution it is often employed to examine the equality of variances between two normal populations. Two normal populations. It is an asymmetric distribution with no maximum value. And a minimum value of 0. और एक MCQ के लिए आएगा तुम्हारे लिए यहाँ पे, the curve approaches 0 but never reaches horizontal axis. Never reaches horizontal axis. Never reaches horizontal axis.
डन एवरीवन, डन एवरीवन, चलो फटाफट से बताओ हो गया क्या। आगे जाएंगे, फोर्थ पॉइंट और 3 है इसके अंदर। ची स्क्वायर distributions. I know, but yes. When independent variables with standard normal distribution are squared and added, the chi-square distribution occurs. The chi-square distribution occurs. Example, y is equal to z12 plus z22 plus z32. This goes to plus zn. If z is a typical, normal, random variable. Z is a typical, normal, random variable. लास्ट और दो, लेट्स गो। ये फोर्थ था तुम्हारा, फिफ्थ exponential distribution. It is a probability distribution. It is a probability distribution and one of the most often employed continuous distribution. Used frequently to represent products with the consistent failure rate. With the consistent failure rate. And the very last, T student distribution. The T distribution or students T distribution is with a bell shaped. जो इसके पहले देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसके लिए रहने वाला है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है, और ये जो अपन लोग देखने वाला है इट इज ऑल अबाउट सिमेट्रिक वे. ठीक है, शेप्ड नहीं है, शेप है, शेप, दैट इज सिमेट्रिकली
that is symmetrical about its mean, about its mean. Used frequently for testing hypothesis and building confidence intervals for means, building confidence intervals for means. लाइव स्ट्रीमिंग एक बार बताएंगे आपका लिख के हो गया क्या, तो फिर मैं वापस से कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मार्क करके देने का काम करती हूँ. आई होप इट इज डन. चलो फटाफट से अपने पास हाइलाइटर लेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना चालू करेंगे साथ ही साथ में, सो दैट तुम लोगों को वही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल भी तुम लोगों को रहेगा. ठीक है. डन. तो ये था तुम्हारा कौन सा मार्क किया हुआ, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क करके देने का काम किया है. कौन सा वाला पॉइंट नहीं हुआ है, नॉट विजिबल, क्या रे, क्या नहीं दिख रहा, कौन सा पॉइंट नहीं दिख रहा, एक बार बताएंगे. मंडे से तो तुम्हारे और मजे ही मजे हैं. दिख रहा ना, ठीक है. नहीं भी दिखा तो मेरे को बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, इतना ही. एमसीक्यू में ये आ सकता है तुम लोगों को. नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मेरे को ये हटाना है, ये मत मार्क करो. क्या था यहाँ पे, ऑफन एक्सपोन. डन. तो ये इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स को अपन लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पे मार्क करने का काम किया हुआ है. आप लोगों ने भी मार्क कर लिया क्या, एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे, मार्क किया क्या आप लोगों ने. ठीक है, चलो डन. तो आज अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को करा हुआ है, लेकिन वापस से एज सेड ये 2 क्वेश्चंस थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली अपन लोग क्या करेंगे, और एक मैंने तुमको होमवर्क दिया हुआ है, स्टेप्स का होमवर्क दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन के स्टेप्स को, उसको याद से कंप्लीट करने का काम करेंगे. प्लस उसी के साथ साथ
नेक्स्ट इसी की टॉपिक के नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और मैंने निकाले हुए, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डेटा वैलिडेशन एंड इट्स टाइप्स एंड व्हाट इज डेटा क्लीनिंग एंड इट्स स्टेप्स। ये जो दो टॉपिक्स है इसके क्वेश्चंस अपन लोग करने वाले हैं कब, ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में करने का काम करेंगे, एंड हुआ तो उसी के लेक्चर में अपन लोग थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आया क्या ध्यान में आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग वालों? सो यस इसके बाद आप लोगों का रहेगा एसएम का लेक्चर स्केड्यूल, आप लोग आपके स्क्रीन पे देखने का काम कर सकते हो। मेक श्योर करो जितना आप लोग लिख रहे हो साथ ही साथ में मेरे लिखते टाइम जैसे मैं आप लोगों को डिक्टेट करने का काम करती हूँ वैसे आप लोग भी लिखते टाइम डिक्टेट करते जाओ तो आप लोगों को भी बेनिफिशियल होगा। मतलब जैसे जैसे मैं डिक्टेट कर रही हूँ वैसे आप भी खुद होके जोर से बोलते जाओ तो आप लोगों के दिमाग में भी बैठ जाएगा। पहले आप लोगों ने कभी तो लिखा रहेगा, अब आप लोग लिखेंगे, अब आप लोग बोलेंगे, आप लोगों ने लर्न भी किया हुआ है तो आपको बेनिफिशियल भी जरूर 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 हुआ रहेगा। एंड यस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगेन मैं बता रही हूँ ये नोट्स आप लोगों को कोर्स सेक्शन में मिलेंगे, कोर्स में मिलेंगे। कोर्स का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, फ्री कोर्स है 1 रुपीज का, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो लेट मी नो वंस डन विद द लेक्चर कि कैसा लगा आपको ये आज का सेशन। सी यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीिंग। आपका रहेगा एसएम का लेक्चर 1 बजे। बाय बाय।